This is like a big topic in itself in AI. Open source AI model की एक dark side है. So hello everyone, today we are talking to AI specialist from Google, talking in depth about fine tuning models. RAG, which was released last year, and he learned really quickly on the go, even after 10 years of experience, how he keeps up to date with new technologies and वो कैसे अभी भी सीखते रहते हैं, and how he started learning about AI since his IIT Delhi days. But first, this video is brought to you by Code Cloud because you really need to experiment AI to learn better, and with NVIDIA chipsets available on pretty much all cloud platforms, Google Cloud, Amazon AWS, and even Microsoft Azure, you can try all three in one subscription provided by Code to Cloud, and they give you hands-on training because in their course they believe 80% of the learning happens when you actually do it. So they give you credentials for all three cloud platforms. You log in, try it out, and then learn. So get started with AI-based learning with cloud technologies from Code Cloud with the link in description below and get your discount. So hello everyone, today I am with Google's AI ML specialist with almost 6+ years of experience with a PhD degree and a senior AI ML specialist. So first of all, Rahul, can you please introduce yourself? Hi, my name is Rahul. So I have a PhD in computer science from University of Illinois Urbana-Champaign. I did my PhD in 2010. उसके बाद almost like 14 years of industry experience है मेरा. Last 6 years Google में अब most recently मैं AI ML और उसकी applications पे काम करता हूँ. You did your PhD in computer science, but when did you start to learn? Sure. So my AI background starts even before my PhD. So I did my BTech from IIT Delhi. So in the campus of IIT Delhi, there was IBM Research Lab. So I did my dual degree, so BTech and Masters. So during my Masters, 1-year project I did with IBM Research Lab. So that project was in AI. So specifically how to apply AI for contact center or call center email automation. So जैसे call center agents होते हैं उनको like you send so many emails. So how they can use AI ML to generate the responses. तो उस टाइम पे क्या होता था काफ़ी वो template based होते थे वो सारी चीज़ें. So like as you mentioned, GPUs were not that powerful. The compute was more on like CPUs, so the models were much more smaller, and there was no like generic LLMs that we have today that can do all sorts of things. So essentially you had like smaller models. So at the time it used to be more like SVMs or those kind of things that we were using. Oh, nice. So you started learning before even your PhD. So what was your passion? Like, काफी students struggle to find their passion because currently there are much more fields than before, blockchain. So how did you figure out कि आपको AI, that early? Like, no one had imagined there will be an AI boom at the time. How did you figure out you should learn then? So it was, I would say, more a matter of chance. So like जब मैं PhD में आया, so there were like very passionate professors and very like well-known professors in our university. So like my PhD was more in the background of computer vision and multimedia networking. So basically we were building 3D teleimmersive systems. So like it's like as we are standing next to each other, instead of 2D videos, you place real-time 3D videos. And so if let's say you are in some other part of the country and we would appear as if we are standing next to each other. And it was like really hot technology, but like we were really bound by network capacity as well as compute capacity at that point. So even though like it was a great project, but it couldn't be commercialized, then we start getting into like what new kind of use cases could be built around that. And immediately after PhD, a professor of our university, they were basically building a startup company, and that was in the field of like multimedia networking and all, and that's where like I got into it, and that was great. So like Citrix acquired that company, and that was a great exit. Yeah, totally. IIT Delhi is the biggest hub of innovation of India because most startups and unicorns have been, from IIT Delhi itself. Yeah, so obviously like in IIT, like the kind of exposure you get is really great. So I mean, they say like
even in like summer, you go and work with like even lot of people used to go and work with like outside universities, like in summer projects and all. And given like we were working very closely with research labs, and also we were like very abreast with whatever is going on in the latest technology. Now, the amount of respect AI engineers have skyrocketed. What do you think? Your AI knowledge, it started from undergrad. Do you feel more empowered with that knowledge as compared to before? Because many AI engineers, AI specialists like you are getting poached from all sorts of places and given 3x offers. So what do you think now? How your knowledge has evolved? Yeah, so I mean, Google was still at the forefront of AI and cutting edge technology. So, this paper for like LLMs that was developed in Google, and then like this became public. So like internally there were like a lot of projects that were happening. Especially in last 2 years, I would say, when like OpenAI came and with ChatGPT and all, that's when like things really started to skyrocket and all. I would say this is, I would say, is a phase. So like each technology, they go through like different stages. And I feel like AI is a cutting edge technology. It's not like a blockchain or something like that. This is more, you can say, the difference between using desktop computing versus like cell phones. So I would say the kind of applicability of AI and the models is going to be like really amazing. Totally, AI is here to stay, but AI has so many negative connotations right now. जैसे कि Shopify CEO's biggest correlation was with AI, because AI is actually killing a lot of jobs. I would assume like with AI, like you are going to get more and more automation, and a lot of like repetitive kind of jobs are going to get affected. So you have to like keep yourself up to date. So things like coding helpers, for example. So if you are like just writing mundane test cases or automation cases and all, those kind of things can be very much automated with AI. The other big thing was like that nobody thought when AI came, they thought like maybe like software engineers would be first to get affected. But very interestingly, it's more like creative people, you see, like musicians and like film directors and like novel writers and all. They are the ones like who are first to get affected. So what we think is a difficult thing to do versus like what AI/ML and what the model actually thinks is difficult is quite different actually. Oh, so you work on model, right? So you don't see the result, you see the action of model. Like ऐसा करोगे तो ऐसा होगा. So what kind of models you've been developing, and आपको क्या अपने side पे result दिखता है? Like outside people see that, oh, Sora is coming, so jobs of, video creating studios are over. Like no one is creating studios anymore because they are hopeful with Sora. So आपको, what do you see as an AI ML specialist in front of you? What do you see? Models? Do you create models? Do you deploy models? Mm-hmm. So the great thing about AI is it can help a lot of things. So one of the big things that we are also doing is like in terms of education sector, that how like through AI/ML we can help students and we can help educators. So there's a well-known thing called Bloom to Sigma problem. कि अगर students को if you give one-to-one personal attention, they are able to improve their test scores by 2 standard deviations as compared to our generic teaching in the class. And one of the like very passionate projects of mine is how we can teach and give like personal guidance to students at the time when they really need and when they are really struggling. So let's say like you are trying to learn some coding and like many students, they may get frustrated even though they may watch like YouTube videos or read books. But if let's say they get stuck at some time because of some bug or error, they may say like it's not really for me. But at that time, like can we build like a personalized assistant or personalized tutor for the students to help them in all sorts of scenarios? Like these are like great, amazing use cases. Bloom to Sigma problem. So you can look it out. Though this is a well-known problem, so Bloom, he was a researcher, and he found out that
if you do like one-on-one personal tutoring to students, you get like 2 standard deviation improvement in their test scores versus like generic class में to teach them something. तो basically एक student को आप हमेशा guide करो, and AI is that assistant to always guide that student, so that's why they can perform better. Absolutely. In terms of your models, can you share what skills of your AI abilities you use every day? And the team that we work with, like EduPalm is the like Google's education LLM model. So through Vertex API, so Google's Vertex offering is like cloud offering of different sort of models which is there. Can you break it down, please? Like you have models, right? Like so for example, like Gemini is a generic model that is trained on all the different things. So ab usko like how can you further train it for specific tasks? So for example, for education use case, तो उसको लेके like can you train it for let's say Wikipedia articles or like through books which are there on internet and make it answer specific questions of the students. And on top of that, we also build something called RAG or retrieval augmented generation. So let's say some professor, they are teaching like introduction to computer science, and they have let's say like their course videos and like course books and slides that they can upload. So can we ground our responses to the professors? So like let's say students, if they ask some questions, the answers are returned from from the model and also from the slides. So the students can go and refer back to what the teacher taught in the class versus like giving a generic answer and confusing, because with LLMs, grounding is really important, because you must have heard something called hallucinations. So models, they try and they tend to give wrong answers. So what if like in education, like model gives wrong answers to students, and student would write exactly the same thing in course saying like, see, like you told us to use this and like here is what I learned. Absolutely, but Copilot, Microsoft Copilot already does that. Like all of the features you talked about are already done by. So you think this is similar to Copilot, what Copilot is doing? Copilot is more for like coding kind of use case and not for like student teaching, but that's more like if let's say like how to write the test cases, you are more like industry expert and you are a software engineer and then try to help. Versus this is more like in the education and teaching field. So how to teach coding or how to teach, let's say, art history to students if they want to learn more about, let's say, like we are standing in Villa Montalvo. So how was this Villa Montalvo built? Like who built it and like some specific history about it. Oh, nice. तो आप एक सिंपल हिंदी में समझा सकते हो रैग और वर्टेक्स कैसे आप उसको यूज करके मॉडल्स बनाते हो ताकि स्टूडेंट्स अपने पावर पॉइंट स्लाइड्स की समरी ले पाए अच्छे से एआई से एक एआई से बात करके गाइडेंस ले पाए. सो हाउ डू यू क्रिएट इट इफ यू कैन ब्रेक इट डाउन? श्योर. सो वर्टेक्स तो जैसे API की ऑफरिंग है, इसके पीछे लाइक देयर आर डिफरेंट वेज टू होस्ट द मॉडल्स. एक तो कि यू टेक द मॉडल एंड यू बाय योर ओन GPUs और उन पे पूरा होस्ट करो, एंड दैट्स वेरी एक्सपेंसिव. वो जैसे नॉर्मल पीपल दे आर नॉट एबल टू डू. तो दूसरी चीज़ क्या होती है कि गूगल ने ऑलरेडी मॉडल अपने क्लाउड में होस्ट करे हुए हैं एंड थ्रू APIs आप इसको कॉल कर सकते हो और मतलब ये आंसर रिटर्न कर देगा एंड प्रोग्रामेटिकली आपकी अपनी वेबसाइट है और जहाँ से भी लाइक यूज़ कर सकते हो. फिर दूसरी चीज़ होती है कि हाउ डू यू give it your personal data, because the model suppose जैसे 6 महीने पहले वाले डेटा पे ट्रेन किया गया है. now a professor they want to upload their most recent slides. अब उसको आप पूरा मॉडल तो ट्रेन कर नहीं सकते. वो ट्रेन करोगे तो it's going to be too much hallucination and also it will be very computationally expensive for वो सारे courses के लिए जैसे CS 101 के लिए और सारी universities के लिए it won't really work. So उसके लिए क्या करते हैं कि we have something called RAG. RAG is nothing but sort of inverted index होता है कि you take वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स एंड यू बेसिकली एम्बेडिंग मीन्स उसके डिफरेंट चंक्स लेके यू मैप इनटू अ हायर डायमेंशनल स्पेस और दोज डिफरेंट पॉइंट्स. एंड जब यूज़र अपनी क्वेरी पूछता है तो उस हायर डायमेंशनल स्पेस में बेसिकली यू फाइंड आउट कि विच चंक्स आर मोस्ट सिमिलर टू द क्वेरी और उसको LLM को इट गिव्स देम एज कॉन्टेक्स्ट कि अपने आंसर को इनके ऊपर बेस करना.
सो एसेंशियली क्या होता है कि LLM नोज कि मेरे को जेनरिक आंसर नहीं देना, इसके बेसिस पे आंसर देना है. सो दैट वे लाइक वो स्टूडेंट्स को रेफ़र भी कर सकते हैं कि वो जो चंक आया है कौन सी स्लाइड से या कौन से जैसे कोर्स कंटेंट से है. Oh, nice. So basically, instead of using an existing model, उसके ऊपर और data डालना, उससे hallucination होगी. So instead of that, you create a smaller models which are basically like RAGs. तो smaller models में आप data डाल के उसको उसी model के लिए train करते हो, so that the model doesn't imagine any outside information, just thinks about what the data you gave it. So that's why it's better. Yeah. So that's why. Oh, now if students want to get into this next level technologies for AI to become AI engineer, what are the things that they can learn? Is it Vertex? Is it RAG? What are the things you would recommend learning right now? Yeah, so there are many like Coursera and courses, so you have to keep yourself up to date क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज होने लग रही है. एवरी 6 month की नई चीज़ आने लग रही है. इवन RAG is hardly like 1 year old technology and it has like revolutionized chatbot or इस type of question answering. Oh, just 1 year old. Yeah, very new. And you're saying as if like I thought you have 7 years of experience in RAG. You're talking with so much confidence. Amazing. So you continue to learn. Yeah, absolutely. You have to keep yourself up to date कि कौन से नए पेपर्स आने लग रहे हैं and how to like apply these technologies. और दूसरे like Google के भी इन सब technologies के लिए like Google Cloud gives courses and training material. So how do you continue to learn and how do you continue to use AI at work? Google में we have paper reading sessions के वो different interest के लिए कि अगर suppose आपका computer vision का expert interest है तो computer vision के reading groups हैं and similarly natural language processing के उनके through मैं करता हूँ अपने आप को and also like attend industry conferences उनमें से like try to see what is actually happening and knowing like what other companies are doing. For example, for natural language processing, you have ICML and HKI are like some of the top conferences. Similarly, for computer vision, ICCV is like top conference. If an undergraduate student watching now, उसे AI में जाना है, what they can do? Because like I don't know the difference between a person who is getting 900K at OpenAI versus someone who is just getting 100 or 200K. क्या differences हैं? Like just out of undergrad, वो क्या कर सकता है? So first thing is कि आपको you have to take AI/ML के core courses कि जैसे OpenAI या core अगर आपको इसमें जाना है तो you can't fluff your way into वो actual में उसकी theory और वो कैसे होता है वो चीज़ पता होनी चाहिए. And secondly hands-on experience कि अपने आप से कुछ open source projects करके जैसे GitHub पे upload करो and so others you get well known into this particular field. और दूसरा कि maybe work with some researchers or some core professors who are well known. तो जब आप job में जाओगे then those well known people would be known. Absolutely, because a PhD holder, someone who is getting these 900K job, the biggest difference is their research experience, the innovation experience. You need innovative experience. That's something that is rare to find. Yeah. When I saw the profiles of people who go to 900K to 1 million jobs, they have already innovated, and that's the key factor. That's why OpenAI and these companies bring them on the board ताकि वो भी और innovate कर पाए when they go there, right? That's their standing out factor. Do you think is there anything else, or innovation is the main key which brings jobs in AI? Innovation and as I mentioned, like hands-on experience and theory. So like innovation के अलावा अगर आपने you have really worked like profiling, for example, like model fine tuning, वो किसी चीज़ में आपने specialization की हुई है, like even if आपका मतलब suppose research उसमें नहीं है पर आपने previous job में उसमें काम किया हुआ, then like they would also AI की depth में जाते हैं. So can you share कि जब हम AI की models के बारे में सुनते हैं, we hear lot of parameters. Like for example, many open source or non-open source parameters, they are mentioned as with 70 billion parameters or 400 billion plus parameters. So what are those parameters? Can you elaborate? हाँ, so उसको like let's take a step back कि मतलब मॉडल होती क्या चीज़ है. So मतलब बिफोर ये जो LLM और न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह आए थे, उससे पहले जैसे सिंपल मॉडल्स हुआ करते क्योंकि कंप्यूटेशनल हमारे पास बहुत कम हुआ करती. सो थिंग्स लाइक
लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, या आपने सुना होगा डिसीजन ट्रीज, वो हुआ करते, वो काफी स्मॉल साइज के मॉडल्स हुआ करते। और क्या हुआ करता कि एक टास्क के लिए आपने स्पेसिफिकली उसको ट्रेन करा, कि सपोज आपको कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं जो लिखे हुए हैं, तो वो रिकग्नाइज कर लेगा। या फिर आपको डिसाइड करना है कि मतलब कि प्राइस प्रिडिक्शन करनी है कि हाउसेस की क्या प्राइस होनी चाहिए, जो सिर्फ उस टास्क के लिए हुआ करते। तो अब क्या हुआ कि विद दीज न्यूरल नेटवर्क्स वो जेनरिक मॉडल बनाने लग गए, कि एक लार्ज मॉडल बनाओ, और यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ एथलीट, राइट, कि एक एथलीट है, उसको आप जैसे बोलो कि सपोज कोई ट्रैक एंड फील्ड का एथलीट है, उसको आप बोलो कि आपको 100 मीटर के लिए ट्रेन करना है और उसमें एक्सेप्ट पार्टिसिपेट करना है, वर्सेस किसी को कोई एथलेटिक बैकग्राउंड नहीं है और उसको बोलो कि 100 मीटर के लिए ट्रेन करो, तो कौन सा इजी होगा? ऑब्वियसली जिसका एथलेटिक बैकग्राउंड है उसके लिए इजी होगा ना। सो व्हाट दे डू विद दीज मॉडल्स इज दे ट्रेन इट ऑन ऑल लार्ज size data, and then you can fine tune it for some specific task that you want to fine tune it for. So and these models, they are nothing but neural networks. So neural networks, these are very you can think of ये जो parameters हैं, वो different उसकी weights होते हैं neural networks की, so that like when you are trying to train it for a particular use case, you basically do different sort of like k-fold validation, के कुछ डेटा पे ट्रेन करो और दूसरे डेटा पे उसको वैलिडेट करो, और बार बार वो वाला मॉडल लाइक मैन यू कीप रिपीटिंग इट, सो दैट वो जो मॉडल की आउटपुट होगी दैट विल बी एज क्लोज एज कि जो आपने इनपुट दी हुई है। So essentially, like you train it on large size data sets, so like petabytes of data. Essentially, you take diverse things like health center articles, all the scraped websites, books, code repositories, and like all those different sort of things. And essentially, like ये जो LLMs होते हैं, they are nothing but they are like, you must have heard the name transformer model. So what they try to do is it's sort of a prediction of the next word वो जो आएगा, कि think of it like it is hot, so ये वाला sentence predict करना है, so it के बाद क्या what will should be the next character based on वो सारी जो information इन्होंने learn की हुई है। So like that's how you basically build all of these models. And then like the next thing is like fine tuning of these models. So if let's say like you want to fine tune it for like specific tasks or like specific domains, then you can take this generic model and then you can fine tune it for like your specific task. So let's say आपने LLM कोई भी like open source LLM ले लो, या ये जो public ये किसी company का LLM ले लो, you want to fine tune it for let's say summarization purposes or like translation purposes or like code writing purposes, then what you will do is you will take this existing model and then you will like further fine tune it for those specific tasks on that specific data. Now like we can also talk more about like what are the different fine tuning approaches which are there, and how does that benefit over like doing the entire model training and model tuning, whatever you'd like. Example share कर सकते हो like? Yeah, or like think of वो जो simple neural network, अगर जैसे एक सिंपल पैरामीटर का है, छोटे उसका देखो, कि सपोज आपको ये चीज प्रिडिक्ट करनी है कि जैसे को स्पैम डिटेक्ट करना है आपको, कि जैसे ईमेल आई हुई है या वर्ड्स आए हुए हैं, वो चीज वो डिटेक्ट करनी है कि ये वाला वर्ड स्पैम है या नहीं है। दैट्स लाइक वेरी कॉमन यूज केस ऑफ इट। तो आप क्या करोगे, एसेंशियली मतलब उन वर्ड्स को एक डिफरेंट वेक्टर स्पेस में रिप्रेजेंट करोगे, लाइक नंबर स्पेस में, और वो एसेंशियली लाइक वो न्यूरल नेटवर्क वो डिसाइड करेगा कि अगर उसकी वैल्यू एक नंबर से ज्यादा है, एक थ्रेशोल्ड से, देन इट विल डिसाइड कि it is a spam, otherwise it is not a spam. Essentially, like this is something called a sigmoid function.
So and this is like a single neuron, what you call as perceptron basically. So like similarly, if let's say you have to you are thinking of the use case of images. So images के केस में like first you have to extract the features, क्योंकि वो image से वो directly it won't be able to understand कि nose क्या है, क्योंकि वो तो pixels होते हैं, images basically like RGB values. So उससे like you first have to extract features out of that. So like you can extract like different sort of features. That's something called feature engineering, and use those features to train the model. So essentially जैसे मैंने वो spam वाला example दिया था कि उसको आप higher dimensional space में represent करके, और वो जो मॉडल का वो डिसीजन फंक्शन होगा वो सिंपली ये होगा कि अगर उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू एक पॉइंट से ज्यादा है, देन वो डिसाइड करेगा कि ये स्पैम है, अदरवाइज नॉट स्पैम. सो सिमिलरली लाइक अगर नोज आपको डिटेक्ट करना है इमेजेस में, तो नोज के अराउंड की जैसे फीचर्स आप वो एक्सट्रैक्ट करके उसको ट्रेन कर सकते हो मॉडल को. तो उसके लिए ऑब्वियसली एक सिंगल न्यूरॉन काफी नहीं होगा, आपको काफी सारी लेयर्स बनानी पड़ेंगी न्यूरल नेटवर्क की. पैरामीटर्स की रिलेशनशिप ऐसे कह सकते हैं, जितने ज्यादा डिमेंशंस उतने ज्यादा पैरामीटर्स इन अ मॉडल, राइट? इज दैट राइट? या सो हाँ, जितने ज्यादा डायमेंशंस और जितनी ज्यादा बेसिकली लेयर्स. सो बेसिकली उसमें ये जो मैंने एक सिंगल न्यूरल नेटवर्क का एग्जांपल दिया था, उसमें तो आपने एक इनपुट दी, उसकी आउटपुट आ गई. फिर वो क्या होती है कि बीच में अलग अलग लेयर्स होती हैं, कि मतलब एक लेयर की इनपुट दूसरी लेयर में जाएगी और दूसरी लेयर की थर्ड लेयर में. तो अलग अलग लेयर्स बेसिकली आप समझ सकते हो कि अलग अलग चीजें लर्न करने लग रही हैं उस पूरी इमेज के बारे में. सो हम बेसिकली ओवरऑल हाई लेवल डिस्क्राइब कर सकते हैं पैरामीटर्स विच वी हियर कि बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हम यूज कर रहे हैं. बेसिकली हम डेटा को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, मेनी मेनी न्यूरल नेटवर्क्स, मेनी मेनी लेयर्स. जितने ज्यादा हम लेयर्स प्रोवाइड करेंगे, जितना ज्यादा डेटा प्रोवाइड करेंगे, मच बेटर दैट मच बेटर द मॉडल विल बी, राइट? नॉट नेसेसरीली. सो जनरली मतलब आपका ज्यादा बड़ा मॉडल होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ऑलवेज राइट कि आपका बड़ा मॉडल है तो उसकी क्वालिटी बेटर होगी. बट आप ये भी कर सकते हो कि स्पेसिफिकली अगर आपकी टास्क कोई बहुत स्पेसिफिक टास्क है, तो ये चीज जरूरी नहीं है कि आपका वो बड़ा मॉडल ही हमेशा उस पर काम करेगा. मे बी आपकी जैसे स्पेसिफिक ये है कि इमेज में से आपको नोज डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए आप मे बी एक स्मॉल स्पेशल मॉडल उसके लिए ट्रेन करोगे, तो उसकी क्वालिटी बेटर होगी वो बड़े वाले मॉडल से. पर वो है वो आपकी एक टास्क के लिए होगा, वर्सेस वो जो बड़ा मॉडल है वो सारी जेनरिक टास्क कर सकता है. वही आप वो सुनते हो AGI वाला, कि मतलब एक मॉडल वो आप ऐसा ट्रेन कर सकते हो कि नॉर्मल ह्यूमन की वो सारी कैपेबिलिटीज को कर सकता है. सो दैट्स द आइडिया ऑफ अ बिग मॉडल वर्सेस स्पेशली ट्रेन्ड मॉडल्स. Got it. So AGI is a bigger model which जो humans के सारे फीचर्स को कंबाइन करके एक एक चीज कंबाइन की जा सकती है. तो मतलब AGI में छोटे पीसेस की मिस्टेक ज्यादा हो सकती है, बट ओवरऑल एक्यूरेसी ज्यादा होगी. सो फॉर एग्जांपल AGI अगर सिर्फ नोज को इमिटेट करना चाह रहा है, वो शायद इतना परफेक्टली ना हो, बट ओवरऑल ह्यूमन बॉडी फंक्शन की इमिटेशन कैन बी बेटर. Absolutely, yeah, that's the right Oh, understanding. that's wonderful explanation. Now, moving on with these parameters, आजकल काफी open source, non open source models के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ कि कुछ cases में they are continuously increasing the parameters, and कुछ अभी reports आई थी कि कुछ 40 billion parameters models are better than 405 billion parameters models in the same area, whether it's Gen AI or other cases. So why is that? How it happens? सो लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट मॉडल पर आपने किस डेटा पे उसको ट्रेन करा हुआ है, दैट्स ऑल्सो लाइक सुपर इम्पोर्टेंट. सो मेनी अ टाइम्स कि आपने उसको कोडिंग स्पेसिफिक, तो इनके जो टेस्ट बेंचेस होते हैं देर लाइक डिफरेंट कैटेगरीज के जिस पे इनको टेस्ट करा जाता है, कि कोडिंग पे फ्यू शॉर्ट लर्निंग, फ्यू शॉर्ट क्वेश्चन आंसरिंग, और मतलब इस टाइप की अलग अलग कैटेगरीज पे उनको टेस्ट करा जाता है. सो इट कुड बी कि वो जो छोटे वाला मॉडल है उसको आपने ज्यादा डेटा पे ट्रेन किया हो, वो जो स्पेसिफिक डेटा जो उस टाइप की टास्क के लिए उस पे ट्रेन किया हुआ होगा, तो ऑब्वियसली लाइक द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी बेटर. जैसे हमने वो बात की थी
कि like it's also about like how do you take the data, and also how do you like transform the data to like train that particular model. करेक्ट, आई एग्री, बिकॉज आजकल द न्यू मॉडल्स विच आर बीइंग ट्रेन्ड, उनमें कहीं ऑलरेडी एआई जनरेटेड डेटा है विच इज एक्चुअली मेकिंग द मॉडल वर्स। तो इसी कारण करेक्ट एंड वैलिड डेटा को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस केस में हाउ डू यू फाइन ट्यून द मॉडल, हाउ डू यू डिफाइन फाइन ट्यूनिंग अ मॉडल? बिकॉज मॉडल क्रिएट करना तो हमने समझ लिया कि लाइक यू give a data and you have a lot of parameters, layers of neural networks, and then you train it. But what is fine tuning? Yeah. So as I mentioned कि मॉडल में बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। सो अब हर एक टास्क के लिए आप उसको स्पेसिफिकली वो ट्रेन करोगे तो उसमें पेटाबाइट्स ऑफ डेटा लगेगा, इतनी सारी जीपीयूज लगेंगी और टीपीयूज जो कुछ भी लगेंगी, तो वो बहुत कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाता है। और हर एक चीज के लिए इट्स नॉट रियली पॉसिबल टू लाइक फाइन ट्यून द मॉडल। सो अब उसके लिए क्या करते हैं कि दे बेसिकली फाइन ट्यून द मॉडल। सो उसकी भी दो कैटेगरीज होती हैं। एक तो मतलब कि यू टेक द एग्जिस्टिंग मॉडल, वो जो हमने बात की थी कि जेनरिक जैसे 70 बिलियन पैरामीटर्स या जितने भी आपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, और उसको आप उसके सारे जैसे पूरे 70 बिलियन के 70 बिलियन पैरामीटर्स को आप फाइन ट्यून करो अपनी यूज केस के लिए। सो एसेंशियली उसको लेके आपने वो एडिशनल अपनी यूज केस के लिए, जैसे सपोज आपने कोडिंग के लिए करना है वो जेनरिक उस मॉडल को लेके, तो उसको ज्यादा वो कोड के एग्जांपल्स दो उसको फाइन ट्यून करने के लिए। पर उसमें भी दैट्स आल्सो प्रीटी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, क्योंकि पूरे आपने सारे 70 बिलियन पैरामीटर्स को चेंज करना है। दैट्स नॉट अ इजी टास्क टू डू, राइट, एंड स्टिल वेरी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव। तो उस अब there is something called parameter efficient fine tuning that's even more recent technique that like people are using. तो उसमें क्या होता है कि instead of changing all the 70 billion parameters, you freeze your model, और वो जो core model है उसके parameters को change मत करो। Maybe like you can change, but change a few of those parameters in addition to them. So essentially क्या होता है कि like there it's a collection of techniques. So things like you can put like additional neural network layers. So maybe like few thousand parameters वो additionally ले लो, और उन few thousand parameters को जैसे आपके मॉडल में इनपुट करने से पहले उन पे ट्रेन करो इस स्पेसिफिक टास्क के लिए। सो या फिर लाइक थिंग्स लाइक लोरा, यू मस्ट हैव हर्ड लाइक लो रैंक अडेप्टेशन। तो क्या करते हैं कि बेसिकली पैरामीटर्स आर नथिंग बट लाइक ह्यूज मैट्रिक्स, राइट। उसको आप वो डिकम्पोज कर सकते हो छोटे मैट्रिक्स में, एंड देन यू कैन लाइक अपडेट दोज लाइक स्मॉल मैट्रिक्स। सो एसेंशियली क्या होता है लाइक विद पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग से कि like you freeze your base model and you just like adapt like change these few parameters. So इससे आपकी क्या होगी like computational cost save होगी, क्योंकि आप पूरा 70 बिलियन का स्क्रैच से नहीं ट्रेन करने लग रहे हो। लाइक मेमोरी रिक्वायरमेंट्स कम होंगी, क्योंकि पूरा 70 बिलियन का आपको इन मेमोरी रख के और वो पूरे डेटा भी आपको लाइक मेमोरी या डिस्क में नहीं रखना पड़ेगा। ऑल्सो लाइक वो प्री ट्रेन नॉलेज, वो जैसे मैंने एथलीट का एग्जांपल दिया था कि उसने जो पहले की ट्रेनिंग की हुई है, आप वो पूरी उसको लूज करके फ्रॉम स्क्रैच नहीं करने लग रहे हो, बल्कि like whatever they have learned and whatever like the model parameters you have learned, you are like already keeping them, and on top like you are just putting additional layers. So overall इसका बेनिफिट ये है सबसे ज्यादा कि हमें कोई भी LLM हगिंग फेस से डाउनलोड करना है, उसमें अपने कंपनी का डेटा, अपनी पावर पॉइंट स्लाइड्स का डेटा उसको ऐड करके फाइन ट्यून कर दें। सो उसमें लाइक GPT 3.5 या फिर कोई भी बड़ा LLM है, उसका डेटा पहले से होगा, वो फीचर्स भी होंगे, एंड यू कैन ऐड मोर डेटा लाइक जो आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाए जिसके साथ आप चैट कर सकते हो। सो यू कैन ऐड मोर फीचर्स इजिली, एंड ये टेक्निक ज्यादा एफिशिएंट है बिकॉज इसमें डेटा कम यूज होता है ओवरऑल एंड में। या एब्सोल्युटली डेटा कम ही होता है, और इवन लाइक कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी कम होती है। जैसे आपने सुना होगा कि मे बी लाइक
सम ऑफ दीज बिग कंपनीज उनको ट्रेन करने के लिए इतनी सारी एनवीडिया की जीपीयूज और वो लगते हैं, मतलब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ देम। अब नॉर्मल कोई छोटी कंपनी है, आप कोई इंडिविजुअल हो, आप तो इतने रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते उतने बड़े मॉडल को स्क्रैच से ट्रेन करने के लिए। जी, ये तो है। अब प्रॉब्लम ये आती है आफ्टर पुटिंग दैट मच डेडिकेशन इनटू ट्रेनिंग अ मॉडल, काफी एडवर्सरी अटैक्स हो सकते हैं। लाइक सम मॉडल्स आर ओपन सोर्स, दे आर मोर प्रोन टू अटैक्स, सम मॉडल्स आर प्राइवेट, एंड काफी मॉडल्स में इनएक्यूरेसीज भी आती हैं। सो हाउ डू यू स्टे you know away from these attacks and protect your model from them? Yeah, so this is like a big topic in itself in AI, and that's something called like responsible AI. कि आप जैसे मॉडल डेवलप करने लग रहे हो, तो उसमें मतलब हाउ डू यू पुट थिंग्स के जैसे सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज नहीं होंगी, और वो जो मॉडल आप बनाने लग रहे हो मतलब अनफेयर बायस नहीं है। तो बायस इज अ बिग थिंग। तो उसके लिए लाइक जैसे जैसे रेस, एथेनिसिटी, नेशनैलिटी वगैरह के लिए वो बायस्ड रिजल्ट्स नहीं देने लग रहा है। तो इसके लिए रियली इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब एक तो डेटा है, डेटा क्लीनिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। सो इसलिए जरूरी है कि आप वो जो किसी टाइप का बायस डेटा ना यूज करो अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, एंड ऑल्सो यूज लाइक all sorts of sample data, maybe like few categories are not very well represented. कि suppose जैसे race और ethnicity का example लेते हैं, maybe like in your training data you are not using like certain like race or like certain ethnicity that much for training. So फिर वो results में भी like those ethnicity or those races will not be given as output in the result, right? और दूसरी आप चीज कर सकते हो कि मतलब इनपुट एंड आउटपुट फिल्टर्स लगा सकते हो कि मतलब वो यूजर मतलब क्या इनपुट देने लग रहा है मॉडल को, सो यू कैन पुट filters around that, और वहीं पे ही मतलब मे बी लाइक इफ इट इज ऑफेंसिव इनपुट और यूजर मतलब जिस टाइप की आप चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो इस मॉडल को जनरेट करने के लिए, उस टाइप की अगर प्रॉम्प्ट दे तो उसको आउटराइटली आप वहीं पे रिजेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो लाइक पोस्ट फिल्टर्स लगाए जा सकते हैं कि मॉडल की आउटपुट जनरेट करने के बाद कि वो जो रिस्पॉन्सिबल एआई और वो जो जैसे बायस्ड और इस टाइप के मतलब रिजल्ट्स ना प्रोड्यूस करे आपका मॉडल। और दूसरा लाइक आप मैं इसके लाइक ये तो रिस्पॉन्सिबल एआई की बात होगी। जैसे मॉडल की एडवर्सेरियल अटैक्स वगैरह के लिए भी आप फिर कर सकते हो कि मतलब मे बी यू कैन ट्रेन द मॉडल उस टाइप के एडवर्सेरियल अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए। So you can do things like how to prevent is one thing. The other is like you can even use this model to prevent and harden your security stance of your company or your like organization. So you can maybe use it for like adversarial training. So use these models to generate scenarios के आपकी जैसे सिक्योरिटी की क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मे बी यू कैन गिव योर firewall rules and your configs that are in your organization and try to find it the loopholes that are there. So ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इस कारण है, लेट्स से फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार्स अगर एक स्टॉप साइन बना है वहां पे रुकना है, कोई उस ट्रेनिंग डेटा में गलत स्टॉप साइन डाल देता है जिसमें क्रॉस बना हुआ है which can have very wrong intentions, और maybe green light बीच में डाल देता है एक wrong data which can maybe stop the car at green light and accidents can happen. So ये बहुत ज़्यादा डिटेल में करना पड़ता है. So like do you have teams जो इतना सारा like millions में data actual में टेस्ट करते हैं? Like isn't that too much work? No, absolutely. Like Google ka, like from 2018, like this has been the standard that there will be responsible AI. So there are teams के even वो deployment से पहले भी like they will test on all of these different scenarios, and after deployment also there's continuous monitoring of the models. And the other thing also is जैसे आपने self driving का example लिया, like even पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। कि अब जैसे इतने सारे इवन स्पीच के मॉडल्स आए हुए हैं
कि मैं सुनता हूँ कि दे कैन मिमिक समबडी एल्सेस वॉइस। सो मैंने ऐसे केसेस सुने कि जैसे पेरेंट्स की वॉइस में कॉल करेंगे आपको, like LLM, it can basically transform the voice to like parents voice, and बोलेंगे कि like, oh, I'm in an accident, can you deposit some money? So and parents would be in the panic mode and immediately give money. So proper social education is also really important with the kind of ये स्कैमर्स जो हैं, जैसे कितने सारे कॉल सेंटर्स वगैरह के स्कैमर्स हैं, इवन लाइक वीडियो में भी they can imitate you and do a video call very easily by like looking like you. Absolutely. AI regulation बहुत important है, and many professors and many tech experts have emailed जो हमारा यहाँ के यूएस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको ईमेल किया है, जो व्हाइट हाउस है उनको ईमेल किया हुआ है काफी एआई एक्सपर्ट्स ने कि रेगुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी बात पे आई वांट टू आस्क यू योर ओपिनियन ऑन ओपन सोर्स एआई मॉडल्स जिन्होंने कंपटीशन बहुत इंक्रीज कर दिया है। सो देयर इज ऑब्वियसली डार्क साइड वी टॉक्ड अबाउट, पर ओपन सोर्स एआई मॉडल की एक डार्क साइड है कि यूएस डजंट वांट चाइना टू use their free AI models. So how does in general US में जो models train होते हैं, how does they prevent misuse of AI? Because now many AI models are open source and anyone can access them. So it's really important, like when you are building those models, to put guiding principles. So जैसे governmental policies are really important in that particular case, कि किस type के models आप open source कर सकते हो versus not. So like things like कि वो मॉडल जैसे सोशली बेनिफिशियल होंगे, जैसे हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, एनर्जी या ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, उस टाइप के आप करो, इट्स गुड फॉर द एंटायर सोसाइटी। पर उन मॉडल्स में इट्स इम्पोर्टेंट कि जैसे वो हार्म वाले मॉडल्स के उन चीज़ों को आप सर्वेलेंस में यूज ना कर सकते, या फिर मे बी लाइक ह्यूमन राइट्स और अगेंस्ट लाइक सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस, और मे बी यू कांट यूज इट फॉर डिफेंस और फॉर दोज काइंड ऑफ पर्पसेस। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि वो जो मॉडल आप ट्रेन करने लग रहे हो, किस टाइप के आप मॉडल ओपन सोर्स कर सकते हो, more governmental regulation is needed in them. So Google has very strict standards about that. Ki, like before any use case is picked up, okay, like if there is this technology, it's likely going to cause any sort of harm, or it can be potentially even be used for surveillance purposes, or like weapons, or like if it is against international law or human rights or something like that, like they will not even touch these sort of technologies, and they won't build models around that. I think like source models may be like government, if they bring more proactive measures and rules around that can be helpful. Interesting. And what do you think overall of AI? Do you think it is a tool still, या फिर it is to replace human being? अभी किस stage में है? And आपको लगता है कि ऐसी stage आ सकती है, it will replace humans? Probably not. So like humans are going to be needed, because like at the end of the day, like these are just tools to make things easier for the human beings. But definitely वो काफी सारी automation वाली jobs हैं, they are going to get affected. वो तो जैसे पूरे industrial revolution में आप देखते आए, पहले कितने human वाले tools हुआ करते, automation से, machine से, वो उस type की jobs update हुई. So like you have to keep yourself up to date with latest technologies. There's nothing new, but I don't think like humans would completely be obsolete, और वो सारा जैसे डिस्टोपियन आप मूवीज में देखते हो कि वो होगा. आई डोंट थिंक सो दैट्स गोइंग टू हैपन. Awesome. I think मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, आई थिंक, राइट? आपको लगता है कुछ एआई मॉडल्स में कोई और नॉलेज अगर बची हो? मेरे ख्याल से हमने बहुत इन डेप्थ में बात की. हाँ, ये तो है. या आई थिंक या वी आर गुड. Awesome. Awesome. Thank you so much, राहुल, अगेन. बहुत अच्छा लगा. मतलब ये पूरा इन डेप्थ एआई का किसी ने इतना ब्रेक डाउन नहीं किया. अभी हमने इतनी अच्छे से किया है कि कोई 8th क्लास का बच्चा भी, 5th क्लास का बच्चा भी अब समझ सकता है जिसको एआई में जाना है. सो वेरी हेल्पफुल.